interrupt you there because you say the government will continue, but it is people from within your own party who've come out and said that in case there is a decision to replace Gehlot with pilot, then that government is not going to last, and we'll make sure of that. That is where the conversation of a dissidence or of a rumbling or a revolt is actually coming through. It's not us speculating it. It's people from your own party, MLAs from within your own party who are saying that. You know, I think when there are MLAs who have obviously are very impassioned about who should lead them and whatnot, there are statements like this that will come out, but there is not going to be a single MLA who is going to work against the party or the interests of the Congress party whatsoever. Mr. Gehlot, Mr. Pilot and the cabinet is going to ensure of that. Of course, there are a lot of people that would be very vocal about who they want as the chief minister, but when the decision actually comes underway, be very certain that it's going to be consensus based. It is going to be based on what is best for the people of Rajasthan and for the Congress party. And any voices against this decision is something that the High Command is going to talk about and also address and assuage any of their fears. We are going to have a stable government until we go to polls, and nothing and nobody are going to obviously try and jeopardize or even take away from that effort, to be very honest. Now, as far as Mr. Gehlot is concerned, forget the pilot rivalry for a minute as far as Rajasthan is concerned. There are many who believe that if he does end up helming the affairs of the Congress party nationally as the Congress chief, then there perhaps would be issues of people working with him within the Congress infrastructure as well. How do you look at that? First of all, I think, these conversations never come up when the BJP is having presidential elections. We never saw the process for Mr. Amit Shah taking over or from Rajnath Singh. We never saw the entire process of Mr. Nadda taking over and whatnot. There's a lot of speculation of what will happen internally and whatnot. But I can choose and tell you this: whoever contests for the post of the AICC president will be chosen based on the electoral process that we have set up. If, however, it is a unanimous single person that is going to run, rest assured that every person who is a true blue congressman will support him. If there are any attempts of sabotage and whatnot, I think that is self-interest over the interest of the party, and that is something that will be very strongly, condemned, to be very honest. And Mr. Gehlot, I began as a young spokesperson in Delhi when Mr. Gehlot back then was the head of organization. And I think as a statesman and as a politician, the manner in which he's handled government, the manner in which he's, decided with organization and worked with organization, right, I do not believe there's ever going to be a problem. But then again, there is also the scope of more than one candidate in these elections. We have to wait. Absolutely, and we do know that Shashi Tharoor Zaid actually picked up the nomination form for him. So it's perhaps going to be a Tharoor versus Gehlot fight that we see, unless there is a third person that decides to throw their hat in the ring. But do stay on with me, because Laxmikant Bhardwaj of the BJP is also with us, and I'd like to put that question to him, the one that you were asking, that questions are being raised about Congress's election and how it's a selection and not an election. But भाजपा में तो भाजपा के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन भी नहीं होते, ये कांग्रेस का कहना है। भाजपा के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, वहां पर सबको फॉर्म भरने का अधिकार होता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, इलेक्शन प्रोसेस में सब लोग निकल कर आते हैं, लेकिन आपसी सहमति से वहां पर अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, क्योंकि एक अनुशासित पार्टी है। और जो लोग अनुशासित होने का केवल दिखावा करते हैं, उनके यहाँ स्थिति खड़ी होती है। जो भारत जोड़ने निकले हैं, उनकी अपनी पार्टी टूटने का कगार पर खड़ी है राजस्थान में। और अभी भी जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वहां पर जो इनकी रस्साकसी चल रही है, उसमें केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, वही सब घुमा रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर कभी अशोक गहलोत को इस्तेमाल करते हैं, कभी शशि थरूर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं रहा है। वो यही रहा है कि जो गांधी परिवार तय करेगा वो वहाँ अध्यक्ष बनेगा। तो ये जो नौटंकी है इलेक्शन के नाम पर, इसको बंद करना चाहिए। जो जनता है वो सब जानती है और उसके सामने सारी सच्चाई हमें आ रही है। So, Ms. Mahadev, it's a rule by proxy, irrespective of whether it's Rajasthan or it's Delhi. That's the BJP's allegation, that Gehlot is the proxy candidate for the Gandhis at the helm of affairs nationally. And then you will have a Gehlot proxy in Rajasthan, because clearly there are many within the Congress party in Rajasthan that are not okay with Sachin Pilot being at the helm there. It's rich coming from the BJP talking about who's at the helm, and we realize that truly whoever the BJP president is, there's a Mr. Number 1 and a number 2 that handle everything. But when it comes to the Congress, let's make it very clear, the BJP does not have any standing to tell me how my internal election process should work on. ये कोई नौटंकी नहीं है, ये democratic process है, वो हम पालन कर रहे हैं according to the election commission. And irrespective, I think
there's too much speculation right now, almost presupposing that it's only one person. But the beauty of democracy, the beauty of the Congress party is there are several people who do have the right, who have the democratic right to contest for the post of president. There are delegates who've already been chosen. There are lists that are being already submitted in the AICC. So whoever believes that they have the capability and really want to contribute to the party can be part of the election. Nobody is taking away from it. Whoever is chosen, we really hope is a large consensus candidate who can take everybody along. And that is one. And second, let's be very clear about Rajasthan and Mr. Gehlot. There is no more staunch congressman that I've seen than Mr. Gehlot, who will ensure that the Congress government has somebody able and capable to take after him. And I do not believe he's a man that is mired in any sort of petty sort of rivalries, any sort of assuases them. For him, it is about the party, it is about the government, it is about serving the people. And in whatever capacity he may or may not move on to, the Rajasthan government is safe in the hands of the Congress, irrespective of who the face is going to be. कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी भारद्वाज जी, ऐसा कहना है पार्टी का, चाहे वो गहलोत जी हो चाहे कोई और हो। जब चुनाव होंगे अगले साल, कांग्रेस विल फाइट यूनाइटेडली और कांग्रेस फिर जीत के आएगी। 2 साल पहले जब सचिन पायलट ने एक रिबेलियन करने की कोशिश की थी, तब भी भाजपा को अक्यूज किया गया था कि पायलट और भाजपा मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिर से ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि शायद फिर से एक और राउंड हो गहलोत वर्सेस पायलट का। क्या अभी भी बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इलेक्शन से पहले? नहीं, देखिए हम तो अपने इलेक्शन में जाएंगे और जो जनता का मैंडेट होगा उसको स्वीकार करेंगे, लोगों के बीच में जाकर उनका मत लेकर ही सरकार बनाएंगे। लेकिन आप ये इनको जयपुर भेजिए अभी और उनको बताइए कि जो अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ जा रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, इनके अनुसार उनके एक बहुत खास मंत्री के यहाँ पर कांग्रेस के कुछ एमएलए और मंत्री वहां पर इकट्ठा हो गए सचिन पायलट के खिलाफ, और सचिन पायलट के लोग उनके यहाँ जाकर बैठे। पहले अपना घर संभालिए। राजस्थान को आपकी सरकार ने बर्बाद कर दिया, राजस्थान को आपकी सरकार ने उस स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से निकलकर बाहर आना उसके लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो चुका है। भले ही चाहे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे भले ही इनके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में ये दिन कभी देखे नहीं थे जो इनके सरकार के समय, इनके शासनकाल के समय यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक के बाद एक ऐसे उदाहरण जो राजस्थान के माथे पर कलंक लगे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय। और अब आप देखिएगा कि इनके लिए ये डेमोक्रेटिक होने की कई बार दुहाई दे रहे हैं। किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो फॉर्म भरने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो पहले परमिशन लेकर आ रहा है सोनिया गांधी जी से, और वो जो राष्ट्रीय वो परमिशन देंगी तब वो जाके चुनाव लड़ेगा। फिर वो क्या चुनाव लड़ेगा? दूसरा, जो मुख्यमंत्री का चयन आप राजस्थान में करने वाले हैं अशोक गहलोत जी के जाने के बाद, यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि खुलेआम जो सरकार के विधायक और सरकार के मंत्री हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हमें ये स्वीकार नहीं है। इनको जयपुर भेजिए थोड़ा और जयपुर पर फोकस करके इनको दिखाइए कि इनका जो अनुशासन है, डेमोक्रेसी है, चल कैसे रही है। आप थोप देते हैं लोगों को ऊपर, क्योंकि आपको एक प्रॉक्सी आदमी चाहिए होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी और मुख्यमंत्री के लिए भी। जी, महादेव, the allegation of the